Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am yours GK teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 13, things around us. Today I am going to deliver its 8th lecture and the lecture is a project number 2. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So listen to the questions very carefully and then answer. So quickly tell me what are features in which plants are different. Some have flowers, some do not have flowers, some are big, some are small, some provides us with fruits, some provides us with vegetables. So these are how plants are different from each another. So now is the time for Islamic perspective. So my dear students, it is He who has spread the earth for you and made it in paths for you and sent down water from the sky, and then through it we brought forth many species of diverse plants. So my dear students, now is the time for pre-reading questions. So quickly answer the question. So quickly tell me that what fruit do you like the most? Very good. Okay, my dear students. So now is the time for reading. I request you all to please open project number 2 in your GK2 books. I hope everybody has opened it in unit number 13. So my dear students, let's quickly look at the instructions that are given for the project. So which fruit do you like the most? So आपको अपने फेवरेट फ्रूट का नाम सोचना है सबसे पहले, नंबर ए. फिर आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ योर एल्डर्स सर्च द रियल प्लांट और पिक्चर ऑफ द प्लांट ऑफ योर फेवरेट फ्रूट, then observe the plant for its features you have learned before, make a chart and present it in your class, then repeat the search for your favorite vegetable. You may seek help from the table given in project number 1. So my dear students, आपको इसमें करना क्या है कि आपने सबसे पहले अपने फेवरेट फ्रूट का नेम सोचना है. फॉर एग्जांपल आई लाइक वाटरमेलन. उसके बाद आपने अपने फेवरेट फ्रूट के प्लांट को जो है वो रियल प्लांट को आप सर्च करें. अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो आप उसको ढूंढें, अगर नहीं मिलता तो व्हाट यू नीड टू डू इज आप उसकी पिक्चर ढूंढें. आप उसकी पिक्चर ढूंढें और उसके बाद प्लांट को ऑब्जर्व करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जो हमने पहले पढ़ी हैं. बड़ा है, छोटा है, लीव्स कैसे हैं, बिग है, स्मॉल है, स्टेम कैसा है उसका. तो ये आपने चीजें जो है वो उसकी नोटिस करनी है. उसके बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प से आपने उसका एक चार्ट प्रिपेयर करना है और उसके बाद आपने उसको क्लास में प्रेजेंट करना है. सेम आपने अपनी फेवरेट वेजिटेबल के लिए करना है. फॉर एग्जांपल आई लाइक पोटैटोज. सो उसके बाद आपने पोटैटो प्लांट ऑब्जर्व करना है, या आपको जो भी वेजिटेबल का प्लांट, आपको अगर ब्रिंजल पसंद है तो आप उसके प्लांट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, थ्रू पिक्चर्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड देन मेक अ चार्ट एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास. सो आप अपनी किसी भी फेवरेट फ्रूट या अपनी फेवरेट वेजिटेबल के बारे में जो है वो चार्ट बना सकते हैं. ठीक है, तो आपने उस प्लांट की, वेजिटेबल प्लांट और वेजिटेबल फ्रूट जो प्लांट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. ओके, सो नाउ इज द टाइम फॉर इवैल्यूएशन. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स? दे कीप अस हेल्दी and makes the diseases stay away. Okay, my dear students, now is the time for practice. So we'll download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So very easy things around us. Write your favorite fruit, vegetable, plant name and identify its features accordingly. तो अब आपने यहाँ अपने favorite fruit, vegetable या plant का नाम लिखना है. जैसे for example number 1, I like watermelon. Now, कैसा है उसका प्लांट? Is it big or small? So it is small. इसी तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट का चार्ट बनाना है. लीव्स स्मॉल है या बिग है? So small. Then flowers, does it have flowers? So yes, इसके ऊपर flowers होते हैं और फिर उसी से watermelon grow होता है. Then stem, इसका stem thick है या thin? So इसका पतला सा thin stem होता है. बिकॉज इट्स अ क्रीपर, ये एक बेल होती है उस पर लगता है ये. स्टेम कलर कैसा है? वो ग्रीन ही होता है इसका. सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द इंस्ट्रक्शंस अबाउट और द नॉलेज अबाउट द प्लांट दैट यू लाइक और द फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू लाइक. Okay, my dear students, now is the time to note down your homework. Make flashcards of your favorite fruits and vegetables. तो इसी तरीके से आपका आज होमवर्क ये है कि आपने प्रोजेक्ट 2 की इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है और घर से अपने फ्लैश कार्ड्स जो है अपने पेरेंट्स की या एल्डर ब्रदर सिस्टर की हेल्प से बना के और आपने स्कूल में प्रेजेंट करने हैं. मैंने आपको डिफरेंट आइडियाज दिए हैं, आपने उनको फॉलो करना है.
So now is the time for wrap up. So today we have learned that plants give us food and vegetables. Plants have different features: stem, color, height, leaves, size, and presence of flowers. So my dear students, I hope you will make your project and you will love doing it. Thank you so much, and Allah Hafiz.